Okay, so you can see the first question. It says if the common difference, and all these questions are 1 mark questions only, okay? So if the common difference of an AP is 3, then we have to find 820 minus 850. So in this, you can open your notebook, Manu, so that way you can also solve along with me. So we have the common difference given, which is 3. That means D is 3, right? Yes. We have to find 820 minus A15. You know that what is AN formula? It's A plus N minus 1 into D, right? So what will be 820? A plus N minus 1. That means 20 minus 1 into D. D is 3. So into 3. Correct? Yes. Okay, so this we have got for 820. मैंने formula use किया for 820. Minus A15 के लिए भी same formula. A plus N minus 1. N क्या है 15. So it's 15 minus 1 into D. D क्या है 3. So into 3. And then bracket closed. Right? Now इसको solve करेंगे तो this is now very simple. A plus 20 minus 1 is 19. So 19 into 3. And then minus A plus 15 minus 1 is 14. So 14 into 3. Manya, ye clear hai? Yes. Okay. Now let's go ahead. Can you tell me what is 19 times 3? Just a second. Yes. You can, you can do these multiplications and you can let me know the answer. 51. 51. Is it 51 or is it 57? It's 57, right? Yes. Okay. Then minus A plus, what is 14 times 3? 14 times 3. 42. That's correct. It's 42. So now we have, of course, A plus 57 if I remove the bracket, and then minus if I remove the bracket here, this will become A and plus will become minus 42. Do you understand this? Yes. Okay, so we क्या cancel होगा? A और minus A cancel. So what is the answer? What is 57 minus 42? You can tell me 57 minus 42, that would be your answer. It's 15. So what's the answer of 820 minus A15? It's 15. Clear? Do you have any doubt in this or is it clear? It's clear. Okay, let's go to the next question. So here these are 1 mark questions, but still I'm explaining you in detail so that you understand the concept also. The next question is, of course, the questions are going to be mixed. So okay. Find the value of A, just a moment here. Find the value of A so that the point 3 comma A lies on the line represented by this. So you have an equation of a line given, which is 2x minus, 1 second. I wanted to highlight it, but it just got. Okay, I'll write on here. It's 2x minus 3y is equal to 5. This is an equation of a line. Now it says that we have to find out, sorry, it's 2x. Okay, it should be something else, I think. It's 2. Okay, it's a mistake. It is 2x minus not 3y, but 2x minus 3a. There is a mistake in the question. It's a. So we have to find the value of a in this, where it says that the point 3 comma a lies on the line represented by 2x minus 3y. Actually, it will be y only. I'll just tell you that y we will put at the place of a. So it's 2x minus 3y is equal to 5. Now, what is the meaning of 3 comma a? Remember, Manya, the first value is the value of x and the second value is the value of y. So if you put this in this equation, it will become 2 times 3 minus 3 times. Here, at the place of y, you can put a is equal to 5. Do you understand this? Yeah. हमने ये वैल्यू पुट क्यों किया? क्योंकि एक लाइन है और उस लाइन पे ये जो पॉइंट है वो उसी लाइन पे है, तो वो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो जो भी x है वो हो गया 3 और जो y है वो है a.
तो हमने x की जगह पे 3 पुट किया और y की जगह पे a पुट किया. So 2 times 3 is 6 minus 3 into a is equal to 5. So 2 times 3 is 6 minus 3 into a is 3a is equal to 5. Here, Manya, I'll write down 6 as it is. I'll shift 5 to this side, so it will become minus 5. And I'll shift minus 3a to the other side so that it will become plus 3a. Clear? So what is 6 minus 5? It's 1, right? So 6 minus 5 is 1 is equal to 3a. So can you tell me what is the value of a? Will a not become 1 by 3? And Yes. that's the answer. So the value of a you have got 1 by 3. Clear? Yes. Okay. So if this is clear, let's go to the next question. And the next question is on your favorite topic. And these all questions that we are solving, these all questions have come in the board exams. Okay. So the next question, I'm going to put it here. So it is on AP. Okay. So it says for what value of k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP. What is the meaning of consecutive? In Hindi, I would say consecutive का मतलब होता है लगातार. Okay. So यहाँ पे I will just tell you one thing कि अगर हमारे पास 3 terms है और वो तीनों AP में हैं तो इसको हम also एक way में लिख सकते हैं and that will be simply जो second term है, okay, जो second term है that will be equal to the sum of the first and the third term divided by 2. ठीक है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं अगर तीनों टर्म सीक्वेंस में है तो, okay, consecutive terms AP में है तो. Alright, so using this formula मान्या यहाँ पे हमारे पास वो 3 टर्म्स है k plus 9, मतलब आप बोल सकते हो कि a जो है वो आपका है k plus 9, b जो है वो है 2k minus 1 और c है 2k plus 7. ठीक है. According to this formula, जो मिडिल टर्म है, of course b is equal to a plus c by 2 है फॉर्मूला में, राइट? तो यहाँ पे b क्या है? 2k minus 1 is equal to a क्या है? k plus 9, c क्या है? 2k plus 7 and then divided by 2. क्लियर है माने ये फॉर्मूला है. इफ a b c are in AP तो इसको हम लिख सकते हैं जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा और दैट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप याद रखना 2 दिन बाद आपको मे बी ये क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इट, राइट? अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, राइट? सो पहले तो 2k minus 1 को विल कीप 2k minus 1 ओनली. लेट्स राइट डाउन हियर 2k minus 1 को विल कीप 2k minus 1 और यहाँ पे k plus 2k को कैन वी नॉट राइट डाउन 3k, right? K plus 2k will become 3k. And what is 9 plus 7? 16, correct? Divided by 2. अभी we have to find out the value of k, right? But ये जो divided by 2 है ये कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे. तो what we'll do is 2 को हम shift करेंगे यहाँ पे. तो 2 जो है वो इससे multiply हो जाएगा 2k minus 1 से. And that will be equal to 3k plus 16. Okay. Now इसके बाद तो of course we'll multiply this. What is 2 into 2k? It's 4k. Minus what is 2 into 1? It's 2 is equal to 3k plus 16. यहाँ पे माना we have to find out the value of k. So of course k वाले terms from together साथ में लिखेंगे, right? So 4k as it is, 3k will become minus 3k is equal to 16 will be as it is and minus 2 will become plus 2, right? Now what is 4k minus 3k? It's k because 4 minus 3 1 होता है. So 1 into k will be k only. And what is 16 plus 2? It's 18. और k की value हमें find करनी थी. We have got the value. K is 18. Tell me Manya, clear है ये question? ये समझ आया आपको या कोई डाउट है इसमें? Yes. क्लियर है? ओके. सो आपने एक फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला आप लिख लेना. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ओनली. ठीक है. बट ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है
और आप मानिए अभी ये लिख लो, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, फाइंड द मीडियन यूजिंग एन एम्पेरिकल रिलेशन। सो ये जो एम्पेरिकल रिलेशन है, इसको एक और नेम से, यू नो, लाइक वी कॉल इट, व्हिच इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो आप याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप अगर मीन मीडियन दिया है तो आप मॉड निकाल सकते हो, मॉड और मीन दिया है तो मीडियन निकाल सकते हो, और मोड और मीन दिया हुआ है, और या फिर यू कैन से मॉड और मीडियन दिया हुआ है तो मीन निकाल सकते हो। तो कोई भी दो दिया होगा, हम तीसरा निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो यू कैन राइट डाउन कि फॉर्मूला ये है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। राइट डाउन फॉर्मूला राइट नाउ मानिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला लिखोगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन, वी नो यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, आप ऐसा भी लिख सकते हो। यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने ये लिखा, अभी हम इसमें जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सब वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे मॉड जो है वो 8 दिया हुआ है, बिकॉज इट सेज मॉड एंड मीन आर 8 एंड 9, सो मॉड 8 है और मीन 9 है, राइट। सो बिलो मॉड विल राइट ऑन 8, 3 टाइम्स मीडियन हमें फाइंड करना है, so we'll keep median as it is, minus 2 टाइम्स मीन क्या है 9, so 2 times 9, clear? Now this will become 8 is equal to 3 times median minus 2 times 9 is 18. Now of course here Manya you have to find out the value of median, right? So हम ये जो 3 times median है उसको यहीं पे रहने देंगे, and we will shift minus 18 to the other side, so it will become plus 18. Now can you tell me 8 plus 18, what's the answer? Just a second. 6. 26, right? Is Yes. equal to 3 into median. If there is no sign, that means the between 3 and median the sign is multiplication. So of course median find करना है तो 3 को हटाना होगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा। So what is the value of median you have got? 26 by 3. अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 times 8 is 24, so it's 8.667, right? So it's 8.66666 ऐसा होगा, so आप उसको 8.67 भी लिख सकते हो, and that is, if you want you can keep the answer here also, like you can leave the answer at that point. Clear, Manya? Yes. Okay. So tell me, do you remember I had told you in the last class that I'm going to ask you the formulas. You have learned all the formulas? Yes. Okay. So let's do one thing now before we go to the next question. Let's do some formula check. Let's revise the formulas. So I'm just going to ask you the formulas here. So sine, you have to make the table also on your own. So Manya, can you tell me the tables? Yes. It's sine, then Cos. cos. No, it's cos only. And then tan. And then Cosec. cosec, Sec. sec, Cot. cot. Okay, now tell me, angles कौन से थे? 0. 0, 30. the 30, 45. 45, 60. 60, 90. 90. Okay, now tell me the values. Sine 0 degree will be 0. Okay, it's 0. Let me change. Yeah. Then Sine 30 degree. sine 2. 30. Sine 30 is half. Okay. Sine 45 will be 1 upon root 2. 1 upon root 2. And sine 60. Root 3 upon 2. Root 3 upon 2. That's correct. Sine 90. 1. Very good. Next.
Cos 0 will be 1. Cos 0 will be 1. Cos 30 will be root 3 upon 2. Very good. That's correct. Cos 45 will be 1 upon root 2. That's correct. 1 upon root 2. Then Cos 30 will be, cos 60. Yeah. 1 upon 2. 1 upon 2. And cos 90 will be 0. very good. Next. Tan. Tan 0 would be Tan 0 will be 0. 0. Tan 30. And 30 will be 1 upon root 3. 1 upon root 3. Tan 45. 1. 1. Tan 60. Root 3. And tan 90. Not defined. Very good. Next. Cosec. Cosec 0. Not defined. Not defined because वो sign का उल्टा होगा, so 1.0 will be undefined. Next. Cos 30 will be root 2. 1 upon 2 reciprocal, right? Which is 2, right? Manya? Okay, next, cosec 45. Root Sin 2. की जितनी values है सब opposite हो जाएंगे, reciprocal हो जाएगा उसका, root 2. That's correct. What will be cosec 60? 2. 2. Cosec sin 60 है root 3 by 2 तो उसका reciprocal हो जाएगा 2 by root 3, right? Yes, okay. And what about cosec 90? 1. That's correct. Sec. Sec 0. 1. That's correct. Cosec sec 30. 2 upon root 3. That's correct. Sec 45. Root 2. Very good. Cos sec 60. Sec 60. 2. Correct. And sec 90. Not defined. Very good. Not defined. And now the cot. Exactly the opposite of tan. Not defined. Not defined. Root 3. Root 3. That's correct. 1. Cot 45. That's correct. 1. Cot 60. 1 upon root 3. 1 upon root 3. And what is cot 90? 0. That's correct. So ये formula लिखने में माने, do you have any problem? Because ये formula लिख के you can solve a lot of questions from trigonometry, right? Yes. ठीक है. Okay, now we can go to the next one. So next के लिए तो you can tell me first all the 3 famous trigonometric identities. वो जो 3 famous trigonometric identities हैं, that you can tell me. Sin theta square. Sin square theta. Sin square theta plus cos square theta equal 1. Very good. Next. 2 और थे, एक वो ट्रिक था जो मैंने समझाया था. That was just like मेरे नाम पे भी था वो. Sec square theta plus tan square theta minus बाकी के दोनों formulas में minus था.
minus tan square theta equals 1. 1. Next. Cot square theta minus cos square theta. No, cosec square theta minus cot square theta will be 1. So ये One. हमारा 3 फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था एंड माने आई होप यू नो कि इस तीनों फॉर्मूला से भी और भी फॉर्मूलाज हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर cos की वैल्यू दी हुई है और साइन निकालना है तो व्हाट यू विल डू, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और cos के जगह पे cos की वैल्यू डाल के उसको 1 के साइड शिफ्ट करके साइन निकाल लेंगे, राइट? Yes. ऐसा सेम हम sec और cosec के साथ भी कर सकते हैं, मतलब दोनों फॉर्मूलाज अदर फॉर्मूलाज जो है उनके साथ भी. ओके, एक और फॉर्मूला वो था, वो भी कर लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस, एंड टैन थीटा क्या होता है, टेल मी. सो यू रिमेम्बर द ट्रिक जो मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था. Yes. Sine will be Papa bolo P upon H. Nice, it's papa hello, so it's p by h, No, then P upon B. no, it's p upon h only, papa hello, right? So it was p by h. Next, B papa upon hello, yeah, then it's beta hello, right? Papa hello, then beta hello, then Papa papa bolo. Polo. That's it. So this was a very nice trick. I still use the same trick. Okay. And then इससे cosec का निकल जाएगा, क्यों? Because cosec theta और sin theta आपस में reciprocal होते हैं. यहाँ से sec theta का निकल जाएगा because वो reciprocal होते हैं, और cot का निकल जाएगा because tan और cot आपस में reciprocal होता है. So tell me cosec क्या हो जाएगा? इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं, just उल्टा करना h by p. Then H upon B. h upon b. B upon P. Very good. Let's go to one last formulas on trigonometry, and that was, what was sine 90 degree minus theta? You remember the A formula? Sine 90 minus theta, cos theta, Cos right? theta. Okay, cos 90 minus theta. Sin theta. Very good. Next, tan 90 minus theta. Cot theta. Very good. Cot 90 minus theta. Tan theta. आई होप आपको याद हो मान्या कि ये सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 या 8.3 था. ओके, सो आप ये एक बार रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट, cosec 90 minus theta. Sec square theta. Sec, only sec, because see here is not square, so you'll not use the square. And then sec 90 minus theta, Cos theta. cosec theta, right? Yes. Correct. Okay, let's go to the next. So कल ही हमने डिस्कस किया था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला. यू रिमेम्बर मान्य? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला क्या था? सर्कमफेरेंस मीनिंग पेरीमीटर. ओके, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. सो अगर उसका हमें लेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला था 2 पाई Two. आर. Okay. ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? कल किया था हमने. पाई आर स्क्वायर. Pi r square. Pi r square. Okay. Now we can go to the formulas of volume and surface area and curved surface area. Okay. So let's go to the formula for cuboid first. So for cuboid, Manya, can you tell me what was the volume of a cuboid? It's length times breadth times height. Okay. Okay. तो मैं यहाँ पे एक cuboid ड्रॉ कर दूं जल्दी से. So cuboid में अगर volume find करना है तो you have the formula which is length into breadth into height. Next, total surface area of cuboid का formula होता है 2 times L into B plus B into H plus H into L. माने ये सारे formulas आपको आज ही याद कर लेना है. ओके,
कल तक के लिए नहीं छोड़ना, आज रात को याद कर लेना. आई होप यू आर ऑल्सो राइटिंग दीज फॉर्मूलाज, राइट? Yes. नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो उसका फॉर्मूला है 2 times h and then times l plus b. ठीक है, that's it. This is for cuboid. अभी we can find out for cube also. So cube के लिए let's first write down the, like let's first draw the cube picture. So for the cube, our first formula is going to be, of course, volume. So what is the volume of a cube? If volume of a cuboid is length into breadth into height, then what is the volume of a cube? Will it not be? No. It's side into side into side. यहाँ पे length, breadth, height क्यों नहीं बोलते हैं मान्या? Because यहाँ पे you have all the edges, all the sides are equal only. So that is why we can directly say it's length into breadth. Sorry, instead of saying length into breadth into height, it's side into side into side. Clear? Yes. Okay, so let me reshare. See, things got erased. Sometimes it happens. I'll just quickly write down. It's 2 times h and then times l plus b. Then we had already started for cube also. So for the cube, we have the volume of a cube, which was, of course, side times side, right? Do you remember the total surface area of cube, Manu? Was it not 6 into side square? This was the formula to find the total surface area. Curved surface area, to find the curved surface area, we had the formula 4 into side square. That's it. What is the difference between total surface area and curved surface area? Total surface area में हम simply सारे faces के areas को add करते हैं, top and the bottom. That's it. Okay. ठीक है? Okay. Now all right, let's go to the cylinder now. So for cylinder, Manya, you remember volume का formula क्या था? For cylinder, it was, what was the volume of a cylinder? 1 second, the screen got stopped again. I'll just reshare the screen. Volume of a cylinder tha pi r square h, right? Yes. Total surface area of cylinder tha 2 pi r into r plus h, and curved surface area of a cylinder tha 2 pi r h. Let me just share it. Yeah. So for cylinder, if I just write on here cylinder, we had the first formula for cylinder, which was like, of course, I'm just writing volume first. So volume formula was pi r square h. Total surface area का formula क्या था? It was 2 pi r in bracket r plus h. और curved surface area का formula क्या था? मानो? It's just 2 pi r h. That's it. That is. Yes. You remember cone? Cone में formulas क्या किए थे हमने for the volume, for the total surface area, and for the curved surface area? Okay, I'll write on here. So for cone, we had the volume, which was 1 by 3 pi r square. So जो भी हमारा cylinder का volume था, cone का volume actually होता है 1/3 of the volume of a cylinder. Next, total surface area of cone. So this was pi r into r plus l. Pi क्या है, you know. R क्या है, you know. Radius. What is L, मान्या? मैंने ये बताया था आपको. Cone में L का क्या मतलब हो? You remember? Curved surface area होता है pi r l. Yes. You remember?
हाँ वो बीच वाली आई थिंक कुछ था, बीच में कुछ था उसका। Okay. It was like, for example, if I'm drawing a cone here, then this length is called the slant height. Why is it called? See, normally the height is perpendicular, right? But this is perpendicular. No, it is not perpendicular. It is little slanting. And we want the length of that to find out the volume, the total surface area, and the curved surface area. That is why we call this not as a height because it is not perpendicular. We call this as a slant height. Clear? Yes. Okay. So we have almost discussed all the formulas except okay, we can discuss sphere also. I forgot about the sphere. So sphere का formula याद है मान्य आपको? Volume of a sphere. You do one thing, Manya. I know all the formulas. So if I'll write it, of course, I want you to figure out the formula for the sphere, the volume, the total surface area, and curved surface area. और आप ये लिख लेना, ठीक है? खुद से. Why am I writing? Why am I skipping it? So that you can do it on your own. और इसी बहाने आप बाकी सारे formulas को भी एक बार देख लोगे. ठीक है, मान्या? Yes. Okay. So now we can go to the questions, right? ठीक है? Yes. So now let's solve some questions. So now you tell me, Manya, which topic do you want to solve the questions on? I'm having the questions from all the topics. You tell me, which topic do you want to solve the questions? Any particular topic? Otherwise, I can take any of the topics. But yes, if you have any particular topic. No? Trigonometry. Trigonometry. Yes. You want trigonometry? Okay, absolutely. Let's solve trigonometry questions. So in trigonometry, of course, Manya, we have revised all the formulas already. So formula-based questions we can do, right? Yes. So let me write down the first question from trigonometry. Okay, so in this one, just a moment. So it's like that question, Papa, hello, beta, hello, Papa, bolo. We can do that also. Or we can do this question because just now we did the value, the angle value question, like we revised it just now. So it's 2 tan squared 45 degrees plus cos squared 30 degrees minus sine squared 60 degrees. Manya, this is very simple question. I want you to do this on your own. Tell me, what will you do? You already know everything about it. Tan 45 की वैल्यू क्या? 1 थी, राइट? सो tan स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर. ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है वो फॉर्मूला टेबल पे जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले. आई रिमेम्बर द फॉर्मूला, तो मुझे वो टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? Yes. बट आप वो जो टेबल बनाओगे तो आपको वो फॉर्मूला ज्यादा वैल्यूज क्लियर होंगे. बट बिकॉज मुझे याद है तो मुझे पता है tan 45 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है. सो cos 30 का √3/2 होता है तो cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा? √3/2 स्क्वायर. एंड आई नो sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2. सो विल इट नॉट बिकम √3/2 होल स्क्वायर? नाउ इफ यू नोटिस वन थिंग मान्या, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये प्लस √3/2 होल स्क्वायर है और वो माइनस √3/2 होल स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? सो क्या वैल्यू बचा? 2 times 1 square, which is 1 only. So what is 2 times 1? 2. That's the answer. Did you understand this? Yes. Okay, let's go to the next question. The next question is, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees. Okay, we have to find the value of a. यहाँ पे माने we can use that formula of trigonometry जो हमने last में किया था, 90 minus 90 minus. So tell me,
यहाँ पे tan 2a है, राइट? सो कैन यू टेल मी कि tan a का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ 90 minus a? You remember? Yes. What was it? Was it not cot 90 minus a was tan a? Yes. ये फॉर्मूला था, राइट? तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे tan a नहीं है, tan 2a है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cot 90 minus 2a, बिकॉज एंगल जो है वो 2a है, और यहाँ पे तो ये cot a minus 18 as it is. इसके बाद माने यू कैन नोटिस वन थिंग, यहाँ भी cot, यहाँ भी cot, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 90 minus 2a is equal to a minus 18. डू यू अग्री? Yes. पता है वो हट जाता है, राइट? उसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हटा देना है कॉट को. सो व्हाट इज द आंसर नाउ? इट्स 90 minus 2a, तो 90 को 90 रहने देते हैं, minus 18 को शिफ्ट किया तो प्लस 18, यहाँ पे a को a रहने देते हैं, और minus 2a को शिफ्ट किया तो प्लस 2a. व्हाट इज 90 plus 18? It's 108, right? And what is a plus 2a? It's 3a. So 108 is equal to 3a आया, मान्या. So what is the value of a? Will it not become 108 by 3? Right? Yes. So what is 108 by 3? If you divide this, it will become 36. That is what we wanted to find. We wanted to find out the value of a, and we have got 36 degrees. Clear, Manya? Yes. Okay, if this is clear, we can go to the next. So the next question is, you have to express this question. It is written cot 85 degrees plus cos 75 degrees. This is your question, and you have to express this in terms of angles between 0 and 45. और ये बहुत ही simple है. कैसे simple है? Let's see. Can we write down 85 as 90 minus 5? Manya? Yes. Okay. Can I write down 75 as 90 minus 15? Right? I have written the other things as it is. ये जो एंगल्स है उसको मैंने 90 माइनस के फॉर्म में लिखा है. 85 को लिखा है 90 minus 5, और 75 को लिखा है 90 minus 15. राइट? नाउ यहाँ पे इफ यू नोटिस फॉर्मूला आ रहा है, दो फॉर्मूला आ रहा है. cot 90 minus थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और cos 90 minus थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कैन यू टेल मी cot 90 minus थीटा का फॉर्मूला क्या था? Was it not cot 90 minus theta tan theta? Yes. Right? Okay. And what is cos 90 minus theta? Cot theta. Cos 90 minus theta. Was it not sin theta? Yes. It's sin theta, right? Okay. So using this formula, cot 90 minus 5 will become tan 5 plus cos 90 minus 15 will become sin 15. और that's it. That is the answer. Because we wanted to express ये 85 और 75 को 0 से 45 के किसी एक एंगल के बीच में. 5 आ गया और 15 आ गया. That's it. We are done. So ये simple question था, just हमें express करना था. That's it. ठीक है, मान्य? Now the next question that I'm going to give you is a very important question. So आप ये question solve कर लो अपने notebook में भी, okay? So the next question is, if sec theta plus tan theta, इसकी value जो है वो 7 दी हुई है, you have to find, okay, you have to find sec theta minus tan theta. Okay, मान्य? Sec theta plus tan theta की value 7 है, तो you have to find sec theta minus tan theta. All right. So let's start. इसको फाइंड करने के लिए you have to use that famous trigonometric identity, मेरे नाम वाला जो फॉर्मूला हमने किया था. So you write down directly, we know, right?
We know that formula. What was the formula? Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ये formula पता है हमें? Yes. Identity. But actually if you notice मान्या यहाँ पे ये जो formula है ये a square minus b square वाले form में है, right? और a square minus b square का formula पता है हमें, that is a minus b times a plus b, right? Yes. Tell me Manya, sec square theta minus tan square theta, will it not become sec theta minus tan theta and then times sec theta plus tan theta, right? Using the formula we have got this. अभी sec theta minus tan theta हमें find ही करना है, right? तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे और sec theta plus tan theta की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा 7. सो ये आपस में कनेक्टेड कैसे, मल्टीप्लीकेशन के साथ. तो अगर हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू 7 इज इक्वल टू 1 आ गया और फाइंड करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, सो कैन वी नॉट जस्ट शिफ्ट 7 to the other side so that it will become 1 by 7? Yes, Yes. that's the answer. We wanted to find out sec theta minus tan theta and we have got the answer. Clear, Manya? Yes. Okay, let's do one question and after that we'll take a break. Okay, of 10 minutes and then we'll start. So let's go to the next question. So okay, 1 second, I'm unable to change the color. Yes. So the next question is we have to prove that, okay, we have to prove minus sec A times 1 plus tan A plus sec A will be equal to 2 tan A. ये प्रूफ क्वेश्चन है और प्रूफ क्वेश्चन में क्या करते हैं मान्या, वी स्टार्ट विद द LHS इन जनरल. नॉर्मली LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS में क्या है हमारे पास, LHS में है लेट्स राइट ऑन द सेम थिंग एज इट इज 1 plus tan A minus sec A into 1 plus tan A plus sec A. ओके मान्या? Yes. यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि ये जो 1 plus tan A है और ये जो 1 plus tan A है ये सेम है और ये जो sec A है और ये sec A है ये सेम है और डिफरेंट क्या है, साइन डिफरेंट है. यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, राइट? सो इफ यू कैन नोटिस मान्या, अगर हम इस पूरे को कंसीडर करते हैं A और इसको कंसीडर करते हैं B, तो डू यू नोटिस कि हमारे पास एक फॉर्म आ गया है A माइनस बी और A प्लस बी का. सो A माइनस बी टाइम्स A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट A क्या है, 1 प्लस tan A माइनस B क्या है, sec A, so it's sec square है. I hope you understood this माना, ये फॉर्मूला है A minus B times A plus B का प्रोडक्ट क्या होता है, A square minus B square, right? Yes. ठीक, okay. Now 1 plus tan A whole square, ये अब फॉर्मूला है हमारा A plus B whole square का और इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, A square plus B square plus 2AB. सो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस विल बिकम 1 plus tan square A, of course then plus 2 tan A, right? And then minus sec square A as it is. अभी यहाँ पे if you can notice मान्या, I'm writing 1 plus 2 tan A को साथ में और जो ये tan square है और ये minus sec square है इसको साथ, because वो एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला कौन सा, of course हमारा वो फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रहा है यहाँ पे if you notice. So this will become simply 1 plus 2 tan A. यहाँ पे मान्य if I write down